Have you ever realized the value of something after losing it? Yes, this feeling of losing something valuable is beautifully explained by Alfonso Daudet in the lesson, the last lesson of class 12th English. So hello guys, welcome back to my channel English with Shanta Dwivedi, and in today's video we would be covering the last lesson, which is apparently the very first lesson of the class, and we will cover it in a very simple and interesting way. So let's begin. So starting background से करते हैं हम लोग. Background जो है इस story का, we all know the name of the author. It is written by Alfonso Daudet and the story is set in Alsace. So Alsace is a region captured by Prussia, and the time frame is the time around which Berlin had ordered that only German will be taught in school. So the last lesson is the last lesson of French language. So let's talk about the summary of the story. So in this story there are two major characters. First is Franz. He is the narrator of the story. He is telling us from his POV, and he is a schoolboy who gets late for the day and he is expecting some scolding from the teacher, but instead what he sees in the class was very unusual. When he enters the class, he observe that सारे गांव के लोग क्लास में पीछे बैठे हुए हैं and they are very quiet. So this is something very unusual. तो वो कुछ sense करता है कि something is not right, but he waits for the things to happen so that he can know what is actually happening there in the class. When he arrives, so the teacher Mr. M. Hamel announces, "This is your last French lesson." So what is happening in the class? According to the order given by Berlin government, this is the last French lesson, and from next day onwards they all will be learning German language. किसी भी community के लिए, किसी भी town के लिए, किसी भी village के लिए, their language is something which is the most valuable thing for a region or for a community to show who they actually are. तो अगर मैं ही आप लोगों से बोलूं कि कल से आप लोग सब हिंदी बोलना बंद कर दोगे, तो बहुत अनयूजुअल नहीं लगेगा? ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमसे हमारा कुछ छिन गया हो? तो ऐसा ही विलेजर्स को भी लगता है. बट ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स. दे हैव टू अग्री. दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू फाइट बैक विद देम. So they silently accepted the order, and what happens next is Mr. M. Hamel announces that this is your last French lesson, and something unusual is happening. The schoolboy Franz, who is not at all interested in studies, suddenly realizes. So suddenly Franz started feeling regret, guilt, remorse, क्योंकि उसने कभी अपनी लैंग्वेज को या पढ़ाई को उतनी वैल्यू या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए. सिमिलरली जो विलेजर्स हैं उन लोगों को भी कभी इस चीज का आइडिया नहीं था कि ऐसा भी टाइम आएगा कि उनसे उनकी लैंग्वेज छिन जाएगी. So they all are sitting at the back of the class very silently, and they are paying their respect to their language. Similarly, Mr. M. Hamel, he tells the class about the importance of the language and how beautiful their language is and how it connects with people and how the language carries the responsibility of the identification of the particular community or their village. So in the lesson which M. Hamel is giving to the class, he tells everyone that when people are enslaved, as long as they hold on to their language, it is like holding a key to their prison. मतलब M. Hamel बताते हैं कि if you are enslaved, जब आप किसी के गुलाम होते हो, तो लैंग्वेज इज द ओनली की. और जब आप अपनी लैंग्वेज को भी खो देते हो, दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली एनस्लेव्ड. द होल विलेज, ऑल द स्टूडेंट्स, दे ऑल वर फीलिंग वेरी बैड. फाइनली द बेल rings and Mr. H. Hamel write his final words on the blackboard. He writes, "Vive la France," which means long live France. So this was the silent farewell of the teacher and of all the students and the villagers to their loved and respected language, which they apparently never valued. So they had lost the most valuable thing from which they could identify themselves, and now they have nothing left with them. They only regret about the things. So this was the summary. If we talk about the characters, major characters are Franz, who is a schoolboy and who is very lazy, who is very notorious, and who doesn't reach his school on time and never values studies, never values language. He's a very careless boy, but he turns to be an emotional learner. This boy represents all the students who neglect studies. He also represents the feeling of regret and awakening. Next character is Mr. M. Hamel, the French teacher, who is very strict but loving.
patriotic and a very dedicated teacher. He loves his language deeply and his emotional farewell touches everyone. And at last we have villagers who represent regret and respect for their culture and for their language. तो ठीक है, लास्ट लेसन है, हमने समझ लिया क्या समरी है, क्या होता है पूरी स्टोरी में, बट हमें इस स्टोरी से क्या समझना चाहिए और क्या मैसेज मिल रहा है, लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहला मैसेज जो हमें ये स्टोरी दे रही है, दैट इज नेवर टेक योर लैंग्वेज, नेवर टेक योर freedom or the teachers who are taking you on the right path lightly or for granted. This story tells about the importance of language and education. और ये lesson हमको बताता है that we should learn with dedication because knowledge is power. And other than that, it also tells us to respect and value our teachers who shape our life, who guides us to the right path. And the most important thing which this chapter highlights is that when we lose something valuable like language, we lose a part of our identity, we lose a part of us, who we actually are. So the message of the last lesson is very simple and that is कि आपको अपने language की, अपने culture की and अपनी पढ़ाई की value समझनी होगी before it is too late. तो क्योंकि क्लास 12th का लेसन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना बनता है, तो लेट्स डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इफ वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि व्हाट वाज द अनाउंसमेंट दैट वाज मेड बाय एम हैमिल, हाउ डिड फ्रांस एटीट्यूड towards French language change, and the third importance is the words that was written by M. Hamel on the blackboard, Viva la France, what does they symbolize? So these are the three short questions which are very important from the lesson. Other than this chapter is very important if we look it from the point of view of the long questions, and the first question that is important from this chapter is the theme of linguistic chauvinism. अब होता क्या है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म? पहले तो हम शॉविनिज्म का मतलब समझते हैं। शॉविनिज्म इज व्हेन समथिंग ट्राइज टू डोमिनेट द अदर पर्सन और द अदर कम्युनिटी, एंड व्हेन द वर्ड लिंग्विस्टिक इज एडेड हियर, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर पर्सन इज ट्राइंग टू डोमिनेट समवन और सम कम्युनिटी और सम पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और यहाँ पे हम बहुत क्लियरली देखते हैं कि किस हिसाब से फ्रेंच कम्युनिटी को जबरदस्ती जर्मन लैंग्वेज सिखाई जा रही है, और ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का बहुत क्लियर एग्जांपल है। तो याद कर लो, कहीं लिख लो, नोट्स बना लो, दिस फ्रेज लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर्स पीओवी। ठीक है, अदर देन दिस करेक्टर ऑफ एम हैमिल, हमारे जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे उनका करेक्टर, फ्रांस का करेक्टर, दोनों के ही करेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। इस करेक्टर का कैसा बिहेवियर है और किस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज हाउ अल्फोंसो डॉटेट इज शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। स्कूल में टीचर को, स्टूडेंट्स को तो अफेक्ट पड़ रहा है, बट उन चीजों से जो एक ऑर्डिनरी कम्युनिटी, ऑर्डिनरी पीपल है, उनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो बीइंग शोन इन दिस चैप्टर। तो वो चीज भी अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझ लेना कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है वॉर सिचुएशन का ऑन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। एंड द अदर क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज द कोर ऑफ दिस चैप्टर, दैट वी डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग अंटिल इट इज टू लेट और अंटिल वी लॉस्ट इट। तो इस चीज को चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना और चैप्टर के एग्जाम्पल्स देते हुए पूरा एक डिस्क्रिप्शन निकालना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लास्ट थिंग, यू हैव टू हाईलाइट द थीम्स ऑफ द chapter, and these are the important questions. So that was all for today's video. So this was the last lesson by Alfonso Daudet. I hope I made you understand it in a very simple and interesting way with the important questions. And if this whole explanation was anyhow helpful, please like, share and subscribe to my channel, and see you in the next video.